Welcome to MedGit today, sir. Sir, can you please briefly introduce yourself? I am Dr. Pradeep Bajad. I am working as a assistant professor and consultant in Department of Pulmonary Medicine. Okay, so sir, आज हम डिस्कस करेंगे no consumption of cigarette or smoking. Still, we are concerned for the lungs. Okay, so my first question will be, क्या non-smokers को भी lungs का बहुत dangerous बीमारी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली हम स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग की बात करें सो ये इट्स जस्ट ए चंक ऑफ द डिजीज़ विच आर एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. सो जिसे हम COPD बोलते हैं. सो अराउंड हम ले सकते हैं कि 20 से 25% पार्ट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. बाकी रेस्ट ऑफ 70 to 80% इन्फेक्शन से होता है, कुछ एलर्जन से होता है, कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से हो सकता है. सो जस्ट स्मोकिंग ही कंसर्न नहीं है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, बाकी बहुत कुछ है. Okay, can Delhi-NCR's air pollution cause permanent damage to the lungs? If we talk about the permanent damage, I am particularly the medical science related to the respiratory practice. They are not sure, but definitely the ongoing pollution, poor air quality can trigger the ongoing respiratory disease like COPD, asthma, lung fibrosis. So all these disease behave poor in functioning, poor in control. That's the one thing. And based on the ongoing trials, if human body is exposed for the longer duration with the smoke and the air pollution, there is high chances that we can see permanent damage also. Okay, how safe is the air inside our homes as comparing to the outside pollution? Okay, so I want to split this question in two parts. One, if we are living in a healthy atmosphere, suppose we are in Nainital or Mussoorie, Or in our hometown. In our hometown where the air quality is good and we are dealing with the indoor pollution that is associated, usually associated with all the biomass or the kitchen or cooking. So definitely there is ongoing risk is there along with your in-house cooking also, and sometime your which quality of the paint, which quality of the furniture you have used, whether you are using mattresses or not, whether कुछ fancy से कुछ animal products you already are in your house. So that can lead to some quality of some extent of the allergen trigger, and indoor cooking can lead to indoor air pollution also. So that's the one part. The second part, if I talk about the Delhi-NCR per se particularly, so since there is already poor air quality in outside, so if we say just we are trapped into the house, we are using air purifiers, so we are 100% safe. It's not like that, because the air which is coming into the home or house, that's we are calling is the purified air, it's again coming from the outdoor only. So if the outdoor air quality is poor, how can our home's air quality can be very Good. safe? So that's the difference. So definitely air purifier and all this stuff can help, but if we are living in a poor air quality zone, definitely our home is also having low AQI. Okay, which medical condition could persist shortness of breath? Okay. So there are different various type of the diseases. The most important one is the COPD, that is the chronic condition which is associated with the cigarette smoking, sometime occupational hazard also. So that's the major burden of the chronic respiratory disease illness, where the patient will be suffering, will be having almost lifelong breathlessness, coughing, sometimes sputum production also. Other diseases like lung fibrosis, bronchiectasis, sometime severe asthma can be there for lifelong also, and the patient will be symptomatic for the lifelong. Okay, do air purifiers actually help protect our lungs, or is it the trend? Yes, I admit this. Air purifier definitely play a positive role. There is definitive significant help for our lungs also. We can say this based on the certain trials also. So one journal is there in respiratory practice, that is the Church Journal, where is a significant study has been published that the patients with the COPD, that
is the chronic smoker's lung disease. In particular, the common term we call it the chronic obstructive pulmonary disease, as the COPD. That's in the medical science. So in the chronic smoker's lung disease, if the patients have been exposed with poor air quality, and in the second group, those exposed patients were using air purifier. So the patients who were using air purifier, their exercise capacity was better, their respiratory symptoms were lesser. So definitely it's scientifically proven that air purifier plays a significant positive role. What everyday habits can help keep our lungs healthy? हेल्दी लंग्स की जब भी हम बात करते हैं, सो वी only talk about the cigarette that Yes. if anybody is consuming cigarette, वो cigarette smoke कर रहा है, so उसके lungs unhealthy है, बाकी जो नहीं smoke कर रहे हैं वो सब healthy है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर हम सारे दिन बेड पे बैठे हैं, काउच पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लिया है, सो अगेन ये सब कुछ आपके हार्ट और लंग को सफ़र करना पड़ेगा. सो एक अच्छी फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन, एक रूटीनली एक्सरसाइजेज और योगा करना, डेफिनेटली ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है और ये आपके लंग्स को हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं. डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़ भी नहीं करना चाहिए, वो कोई भी डॉक्टर नहीं कहता आपको कभी. यस Sir, last thing that I want to ask is, what is the biggest myth surrounding lung health? लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एड्रेस किया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिगरेट छोड़ देने से हम सब हेल्दी हो जाएंगे. एक कॉमनली जो मिथ हम देखते हैं, पेशेंट्स कई बार आके बोलते हैं कि हमें कुछ डिटॉक्स करने के लिए बता दीजिए, हमें कुछ डिटॉक्स ड्रिंक, हमें कुछ ऐसे मल्टीविटामिन दे दीजिए, हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग टाइप का इनहेलर बता दीजिए, नेबुलाइजर बता दीजिए, स्टीम बता दीजिए जिससे हम डिटॉक्स हो जाएंगे. सो डेफिनेटली एक्सेसिव स्टीम यूजिंग नेवर हेल्प्स. अगर हम लंबे टाइम तक स्टीम यूज़ करेंगे तो उसमें जो हॉट ह्यूमिड एयर होता है वो हमारी रेस्पिरेटरी डिफेंस को पुअर करता है, ये बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता. स्टीम यूज कर सकते हैं जब कभी हमें कॉमन कोल्ड होता है, गला ख़राब होता है, जस्ट फॉर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए. दैट वाज अबाउट द स्टीम. डेफिनेटली देयर इज़ नो एनी सर्टेन सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एनी मल्टीविटामिन इन द रेस्पिरेटरी हेल्थ. सो जो सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए फैक्टर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो है अच्छा एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, एक अच्छा डाइट चार्ट फॉलो करना. Thank you so much, doctor, for awareing us about our lungs, how to keep them protected. Awesome.